2018. This project is being carried out with technical support from the Archaeological Survey of India, and the project is estimated to be concluded by July 2023. India has been a true ally and trusted development partner of the Maldives. Long live the Maldives-India partnership. Next, we shall witness a video clip on the landmark Greater Malay Connectivity Project in Maldives. India and Maldives enjoy a strong bilateral relationship. Both countries share sturdy cultural links, and the bilateral relations have been nurtured and strengthened by regular contacts at the highest levels. As part of its Neighborhood First policy, India is focused on delivering benefits like greater connectivity, improved infrastructure, and broader people-to-people contacts in Maldives. The Greater Malay Connectivity Project aims to connect the capital Malé with adjoining islands of Vilingili, Gulifalo, and Tilafushi. This will decongest Malé while helping in the development of a port at Gulifalo, which is also being funded through an Indian line of credit. At Gulifalo, the government of Maldives is also planning a residential township. The Greater Malay Connectivity Project is being funded by an Indian grant and a line of credit. This development cooperation is based on Maldives' priorities. The project is being executed by Indian infrastructure major Afghans. The Greater Malay Connectivity Project involves construction of a 6.69 kilometer sea connecting link, including 3.6 kilometers of marine viaduct with navigation bridge spans and 3 kilometers of at-grade roads. A wide variety of marine fleet has already been deployed in the project. A significant amount of additional marine equipment will be mobilized as the project progresses. The Greater Malay Connectivity Project is a testament to a deep and enduring India-Maldives relationship. It's a strong reflection of a shared commitment to development and democracy, and to a partnership that delivers. I now request both the leaders to kindly mark pouring of the first concrete of the project by jointly pressing the launch button. Thank you, sir. Next, we shall view a video clip prepared to review the progress on construction of 4,000 social housing units being okay. Next, we shall view a video clip prepared to review the progress on construction of 4,000 social housing units being constructed in Hudumale. Providing affordable social housing is among the priority pledges of Government of Maldives. In order to enhance the quality of life of the residents of Greater Malay region, the Government of Maldives has initiated the development of 4,000 housing units under two projects: FDC JMC Housing Project and FDC NBCC Housing Project. The projects are supported by India through a bias credit facility from the Exim Bank of India. The extension of India-Maldives cooperation to the social housing sector stems from our flourishing development partnership. Located in Hulumale Phase 2, the two projects will comprise the development of 2,000 housing units each. Both projects will consist of 900 square feet 3-bedroom units and 650 square feet 2-bedroom units.
FTC-JMC housing project is valued at $137 million, and the FDC-NBCC housing project is valued at $130 million. The construction of the projects has now commenced. The projects aim to provide affordable housing for target populations through rent-to-own model and encourage home ownership for first-time buyers. These projects will cater to a total population of 20,000 people. Excellencies, we shall now proceed with the exchange of 6 documents between our two countries. First, we have the MOU on capacity building and training of members of local councils and Women Development Committee and staff of local government authority. This will be exchanged from the Maldivian side by His Excellency Ahmed Khalil, Minister of Foreign Affairs, Minister of State for Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri Giriraj Singh, Minister for Rural Development and Panchayati Raj. Next, we have a MOU for cooperation in the area of cyber security. This will be exchanged on the Maldivian side by His Excellency Ahmed Khalil, Minister of State for Foreign Affairs, and on the Indian side by Shri Ashwini Vaishnav, Minister of Railways, Communications, Electronics and Information Technology. Third, we have a MOU on collaboration in potential fishing zone forecast capacity building. This will be exchanged from the Maldivian side by His Excellency Fayaz Ismail, Minister of Economic Development, and on the Indian side by Dr. Jitendra Singh, Minister of Earth Sciences, Oceanography, etc. Number 4 is a MOU on cooperation in the field of disaster management. This will be exchanged from the Maldives side by His Excellency Ibrahim Amir, Minister of Finance, and on the Indian side by Shri Manu Mahavar, High Commissioner of India to the Maldives. Number 5 is an agreement between Exim Bank of India and Ministry of Finance of the Maldives for police infrastructure. This will be exchanged from the Maldives side by Commissioner of Police Mohammed Hamid, and on the Indian side by Ms. Harsha Bangadi, Managing Director of the Exim Bank of India. And finally, we have a letter of intent on buyer's credit funding approval of $119 million for additional 2,000 social housing units to be constructed in Hudumale. This will be exchanged from the Maldivian side by His Excellency Ibrahim Amir, Minister of Finance, and on the Indian side by Mrs. Harsha Bangadi, Managing Director of the Exim Bank. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the rest of the proceedings. Your Excellency, Mr. Ibrahim Mohammed Soli, President of the Republic of Maldives, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, honorable members from both countries, distinguished members of the delegation, friends of the media, we will now have the press statements. May I now request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to make his press statement. Sir, the floor is yours. Your Excellency, my friend Rashtrapati Soli, दोनों डेलीगेशंस के सदस्य, मीडिया के प्रतिनिधि, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने मित्र राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है, हमारी नजदीकियां बढ़ी है।
महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है। फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति सोली के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माला कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा। हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स उसके निर्माण के प्रोजेक्ट का रिव्यू भी किया। मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। हमने $100 मिलियन की अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट देने का निर्णय भी किया है ताकि सभी प्रोजेक्ट्स समयबद्ध तरीके से पूरे हो सके। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन में ट्रांसनेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है और इसलिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के खिलाफ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग सहयोग भी शामिल है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक नेवल बोट प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 आइलैंड्स में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे। फ्रेंड्स, मालदीव सरकार ने 2030 तक कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है। मैं इस कमिटमेंट के लिए राष्ट्रपति सोली को बधाई देता हूं और यह आश्वासन भी देता हूं कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड इसकी पहल उठाई है और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आज भारत मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है। मालदीव की किसी भी जरूरत या संकट में भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और आगे भी रहेगा। मैं राष्ट्रपति सोली और उनके डेलीगेशन की सुखद भारत यात्रा की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now request His Excellency, Mr. Ibrahim Mohammed Soli, President of the Republic of Maldives, to make his press statement. Excellency, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, members of the media, good afternoon. It is an absolute pleasure to be here again. I would like to thank you, Excellency Prime Minister Modi, the government and the people of India for the warm hospitality extended to me and my delegation during this visit. Maldives-India relationship goes beyond diplomacy. Our values, our histories,
and our cultures are intertwined, making it a traditional relationship. Our centuries-old relationship has grown with political trust, economic cooperation, and coherent strategic policies between our two countries. We see this visit as an affirmation of the close bond that has grown between us. Our relationship has been nurtured and strengthened by regular contact. I hope that we can strengthen the ties we have with Your Excellency and your country. The COVID-19 pandemic has not been kind on anyone. Like many other nations, we were also forced to fully close our borders for months. The result left both our economy and people in distress. Was it not for the generous assistance received in the form of budgetary support, medical assistance and supplies, and the Covishield vaccine donated by the Government of India, our economic recovery would have been hard and long. The air travel bubble arrangement enabled the flow of economic activity. The unrestricted supplies of essential medicines and commodities to the Maldives is evident to the strong bond we share. My government took office with an ambitious development vision. We appreciate India's support and generosity towards realizing this vision and fulfilling our development objectives. During this visit, the Prime Minister and I took stock of the progress made since we last met and discussed ways in which we can further expand and strengthen our relationship. The groundbreaking pouring of the first concrete ceremony of the Greater Malay Connectivity Project and the construction of 4,000 social housing units that we witness today stand as testimony to the strong partnership. This moment is made even more auspicious with the approval of the Exim Bank of India buyer's credit funding of $119 million for construction of another 2,000 social housing units in Greater Malay region. I thank the Government of India for this facilitation. I would like to thank the Government of India for facilitating the additional $100 million for the $800 million line of credit through the Exim Bank of India, which I am confident will be an added impetus to ensure the timely completion of important development projects, including the Cancer Hospital in Lamo Atoll, GAN, and the Hanimado Airport expansion project. We recognize and thank the Government of India for the continuous support to develop infrastructure and expansion of our human resource development. We are pleased to add more agreements in various fields that will contribute to the development agenda today. The MOU signed today on cybersecurity aims to promote closer cooperation and the exchange of information pertaining to cybersecurity in accordance with the relevant domestic laws, rules, and regulations, and based on equality, reciprocity, and mutual benefit. Investing in skill development is a high priority for my government. Today, we sign important MOUs that will help enhance our human resources and development. The MOU signed between local government authority, Maldives, and the National Institute of Rural Development and
Panchayati Raj, India, on capacity building and training, will build the capacity of members of local councils, Women's Development Committee, and the staff of local government authority. The MOU signed between the National Disaster Management Authority of the Republic of Maldives and the National Disaster Management Authority of the Republic of India aims to enhance and promote the cooperation in the field of emergency management between our two countries. The credit line MOU signed between the Ministry of Finance of the Republic of Maldives and the Export-Import Bank of India to develop police infrastructure of the Maldives will contribute towards enhancing cooperation between the police service and the public through neighborhood policing and ensure the social well-being and safety of our communities. The MOU signed between Ministry of Fisheries, Marine Resources and Agriculture of the Republic of Maldives and Indian National Center for Ocean Information Services and the Ministry of Earth Science Government of India will enable cooperation in potential fishing zone focused capacity. In light of the harsh lessons taught by COVID-19, the Prime Minister and I acknowledged that achieving economic resilience is exceptionally important to withstand the shock of unforeseen events. I urge investors from India to seize this opportunity as we work on building back better, to forge meaningful and mutually beneficial partnerships with the Maldives. As such, in collaboration with the Confederation of Indian Industry, we will be organizing 2 interactive business-to-business events in Delhi and Mumbai today and tomorrow, bringing together selected prominent representatives of leading cooperation from the Maldives and India. We welcome the operationalization of RuPay card in the Maldives and agreed to consider further measures to boost bilateral travel and tourism and economic interlinkages, which could lead to mutual benefit of both countries. In addition to bilateral matters relating to education, youth and sports, defense and security, fisheries, tourism, health and IT, the Prime Minister and I also discussed international issues of mutual concern. I congratulate Prime Minister Modi for his initiative and leadership of the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, International Solar Alliance, and India's pledge to achieve net zero carbon emissions by 2070. We firmly believe climate action could only be achieved by international cooperation. Prime Minister and I discussed the issue of terrorism. We both reiterated a firm commitment to the work against terrorism in all its forms and manifestations, and strengthen cooperation to enhance maritime safety and security in the Indian Ocean region. I would like to express my thanks and appreciation to Your Excellency and the Government of India for the announcements made today to gift a second landing assault craft and the replacement ship of the CGS Huravi that was gifted from the Government of India to the Maldives National Defense Force. I would also like to express my thanks for the announcement made today to give 24 utility vehicles from the Government of India to the Maldives National Defense Force. My government, since assuming office, has been fully committed to giving new heights to the relations between our two countries.
our relationship with India will always be of the highest priority. Mr. Prime Minister, along with my visit to India in 2018 and your visit in 2019, and the recent exchanges of high-level visits have brought a renewed sense of dynamism to our relations. Mr. Prime Minister, I thank you for the very personal commitment you have shown in being a friend and partner to the Maldives. I wish Your Excellency and the people of India peace, progress, and prosperity. The Maldives will always remain a true friend of India, firmly committed to our shared vision of peace and development in our countries and our region. Thank you. Thank you, Your Excellency. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Please remain seated as the dignitaries make their way out of the stage. तो आप सीधे देख रहे थे दिल्ली के हैदराबाद हाउस से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने संयुक्त प्रेस स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जिसकी आपने मुझसे की थी। इसमें भारत के दो विशेष नृत्य कला, यानी एक लोक नृत्य और एक शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस और फोक डांस में आपको पढ़ाऊंगा। अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि कथक नृत्य और कथकली, तो दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कथक नृत्य उत्तर भारत का है और कथकली केरल का है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे नृत्य हैं, क्लासिकल डांस हैं जो आपको पढ़ने हैं, और फोक डांस भी हैं। क्लासिकल डांस तो एक मुट्ठी भर हैं, आराम से पढ़े जाते हैं, लेकिन इनको भी हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। और जो फोक डांस हैं वो तो इतने सारे होते हैं कि उसको एक हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में स्टडी करेंगे। जो इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं पे हम फोकस करेंगे और हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको से छौ नृत्य की बात कर रहा हूँ, तो छौ नृत्य कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से लोकेशन हैं, और उन लोकेशंस में भी जो छौ नृत्य होता है उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे मैं अगर उदाहरण दूँ आपको, छौ नृत्य 3 जगह पे होता है। एक बंगाल में होता है पुरुलिया छौ, एक झारखंड में होता है सरायकेला छौ, और एक उड़ीसा में होता है मयूरभंज छौ। लेकिन इन तीनों प्रकार में भी थोड़े थोड़े फ़र्क होते हैं। तो अगेन हम इसको भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे। हम उतना ही डेप्थ में जाएंगे जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो आप जैसे एक मूवी देखते हैं वैसे आपको इस वीडियो को देखना है। आपको ये रोचक भी लगेगा और आपका ज्ञानवर्धन भी होगा। ये इंडिया के जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में कोई ना कोई क्वेश्चन क्लासिकल डांस और फोक डांस से ज़रूर आते हैं, और हमारी जो संस्कृति है उसको जानने के लिए भी ये नृत्य बहुत ज़रूरी हैं। इनफैक्ट मैंने जितने भी इंडिया के स्टेट हैं सारे कवर किए हैं, फोक डांस सब स्टेट्स के कवर किए हैं। तो अगर आपका भी कोई राज्य है, जब आप उसके फोक डांस को स्टडी करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको महसूस होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं जाने से पहले, स्टडी IQ सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है इंडिया का IAS की लाइव प्रिपरेशन के लिए। हमारे हर महीने 2 बैच चलते हैं। एक बैच जो है जनरली हम महीने की 1 तारीख को लॉन्च करते हैं और दूसरा मिड मंथ में हम लॉन्च करते हैं। तो हमारा जो लाइव का बैच है वो लॉन्च होने वाला है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसमें हम पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं प्रीलिम्स और मेंस का। साथ ही साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी हम प्रोवाइड करते हैं, आंसर राइटिंग भी देते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी देते हैं और पूरा का पूरा करंट अफेयर मॉड्यूल भी देते हैं। और प्रीलिम्स और मेंस का पूरा GS आपको मिलता है, हमारे एक्सपर्ट जिसको पढ़ाते हैं। डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे। एक इवनिंग बैच अवेलेबल है जो 6 से 8 होता है रात को, और एक मॉर्निंग बैच अवेलेबल है सुबह 7 से 9। फिर डाउट्स होते हैं तो जनरली 2.5 घंटे से 3 घंटे की क्लास डेली होती है। और जब आप चेकआउट करें, ये आप बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यानी कि अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, और मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको एक कोड यूज़ करना है JG लाइव। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, हमारे सारे कोर्सेज स्टडी IQ के बहुत ज़्यादा रीजनेबली प्राइस्ड हैं,
क्योंकि हमारी कंपनी का जो जो थीम है, जो मेन सोच है, वो है अफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन, यानी ऐसी एजुकेशन जो अफोर्डेबल भी हो और उसमें क्वालिटी भी हो। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है, GG लाइव, पूरा एक साथ लिखना है, बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो, क्लासिकल एंड फोक डांस ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज कि भारत में जो क्लासिकल डांस हैं वो कितने पुराने हैं। ऐसा माना जाता है कि 5000 साल पुराने हैं। 5000 साल पुराने हैं हमारे क्लासिकल डांस। और ये कैसे पता चलता है? विभिन्न जगह पे जो हमारे स्मारक हैं या धरोहर हैं, वहां पे मूर्तियां मिलती हैं या वहां पे पेंटिंग्स मिलती हैं। तो मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब देख के पता चलता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें एक डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला था, नाचती हुई लड़की का बुत मिला था, जो कि ब्रॉन्ज का बना है, यानी कांस्य का बना हुआ है। तो ये भी डांसिंग गर्ल है, नाचती हुई लड़की है, इसका मतलब डांस तो था उस समय भी, राइट। इसी तरह से जो राजस्थान में दिलवाड़ा के मंदिर है माउंट आबू में, वहां पे अगर आप देखें मूर्तियां, तो उनमें भी नाचती हुई जो लड़कियां हैं, नर्तक हैं, वो दिखाए गए हैं। इसी तरह से राजस्थान के किशनगढ़ में अगर आप देखें लघु चित्रकलाएं, वहां पे जो पेंटिंग्स हैं उनमें नृत्य करते हुए पेंटिंग्स दिखाई गई हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के लक्ष्मण मंदिर में, हिमाचल के चंबा में, या ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर में जो नर्तक हैं वो दिखाए गए हैं, दीवारों में उनकी जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। या फिर हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं, वहां पे जो गुफा में चित्रकारी है उसमें भी नाचते हुए लोग दिखाए गए हैं। तो इन सब से हमने ये अंदाजा लगाया है कि भारत में जो नृत्य है वो 5000 साल पुराना है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यह आना चाहिए कि नृत्य जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो नृत्य जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है फोक डांस और एक होता है क्लासिकल डांस, यानी कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। इनमें फर्क क्या होता है? देखिए, फोक डांस तो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई, यानी कि जो कहीं भी लोग ग्रुप बना के या जो विशेष कोई समुदाय है, स्थान है या जाति, उससे इसका संबंध होता है। किसी विशेष लोगों के समूह या किसी विशेष स्थान का पारंपरिक नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। जैसे हरियाणा का एक नृत्य है सांग नृत्य, तो ये वहां का फोक डांस है, यानी हरियाणा के एक विशेष स्थान पर कुछ लोगों ने अपना खुद का ये नृत्य बना लिया, तो ये है लोक नृत्य यानी कि फोक डांस। लेकिन क्लासिकल डांस जो होता है ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये शास्त्रीय नृत्य जो होता है ये हमारे देवी देवता, हमारे भगवान या हमारे जो शास्त्र हैं यानी रिलीजियस स्क्रिप्चर हैं, जैसे रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, उनको समर्पित होता है। यानी उसमें ऐसा नहीं है कि आपने जो डांस किया वो उसमें कुछ भी दिखा दिया, नहीं, इसके बहुत कठोर कानून होते हैं, बहुत कठोर। हर छोटी से छोटा पहलू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें एक प्रॉपर ड्रेस होती है, तो आपको ड्रेस पहननी पड़ती है। अब मान लीजिए आप भांगड़ा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति अपने अलग तरीके से भांगड़ा कर सकता है, उसमें कोई कानून नहीं है, उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन आप भारतनाट्यम ऐसा नहीं है, कहीं भी शुरू हो गए और कुछ भी आप करने लगे, उसको एक उसकी विधि है, प्रॉपर विधि है। और भारतनाट्यम में एक पोशाक है उसकी, एक उसकी वेशभूषा है। और ये जो क्लासिकल डांस होते हैं इनकी संख्या सिर्फ 8 है, बस सिर्फ 8। भारत में सिर्फ 8 डांस हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला हुआ है, और बाकी सारे जो डांस हैं उन्हें हम फोक डांस कहते हैं। तो फोक डांस जो होते हैं ये अलग अलग कारणों से किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी राज्य में फसल पक गई अच्छी, तो वहां के एक विशेष जो जनजाति हैं या ट्राइब हैं, उन्होंने कोई डांस करना शुरू कर दिया खुशी मनाने के लिए, तो वो फोक डांस हो गया। लेकिन क्लासिकल डांस जो होते हैं वो भगवान या हमारे धार्मिक जो स्क्रिप्चर हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उन्हें समर्पित होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है फोक डांस में और क्लासिकल डांस में। अब भारत में हमें जो क्लासिकल डांस के जो सबूत मिलते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, खुदाई, शिलालेख, क्रॉनिकल, या फिर राजा महाराजाओं की जो वंशावली है उनकी लिखी हुई किताबें हैं या मूर्तियां हैं, चित्रकला है, उनमें हमें इनके एविडेंस यानी सबूत मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि संगीत नाटक पहले किए जाते थे। संगीत नाटक का मतलब ये है कुछ ऐसे नाटक या नाट्य जिनमें संगीत का इस्तेमाल होता था, और बाद में जाके यही फिर हमारे क्लासिकल डांस बन गए। तो आधुनिक जो हमारे शास्त्रीय डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, वो संगीत नाटक जो 12वीं से 19वीं शताब्दी तक किए जाते थे, उन्हीं में से निकले हैं। एक बात याद रखिए, सबसे पहला एक औपचारिक जो किताब
हमारे शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर लिखी गई वो किताब है भरत मुनि के द्वारा लिखी हुई, जिसको नाट्य शास्त्र कहा जाता है। तो नृत्य जो हैं उनका पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि के प्रसिद्ध कार्य नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब नृत्य कला होता क्या है? डांस हम कहते किसे हैं? क्या सिर्फ शरीर के अंगों को हिलाना ही एक डांस है? नहीं। नृत्य जो है ये एक कला का रूप है। इसमें शरीर का उपयोग जो है वो संचार के माध्यम के रूप में किया जाता है। यानी सिर्फ शरीर के अंगों को हिलाना ही डांस नहीं है। आप उससे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कुछ अपना मैसेज दे रहे हैं, या आप कुछ अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, संचार कर रहे हैं, तो उसे फिर हम डांस कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, डांस जो है हमारी धरोहर है और ये 5000 साल पुरानी है। डांस को एक, जो क्लासिकल डांस की बात हो रही है, उसको एक डिवाइन ओरिजिन माना जाता है। डिवाइन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल भगवान शिव है, भगवान शिव का डांस है नटराज, यानी भगवान शिव का जो नर्तक वाला रूप है उसे नटराज कहते हैं। तो ये हमारी सुप्रीम मैनिफेस्टेशन है, यानी भारतीय नृत्य की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। क्योंकि भगवान शिव एक भगवान है, तो भगवान को भी नृत्य करते हुए दिखाया गया है। यानी ऐसा माना जाता है कि हमारी जो नृत्य की विरासत है उसका एक जो ओरिजिन है, उसकी उत्पत्ति जो है वो आध्यात्म से हुई, वो हमारे धर्मों से हुई है। और मंदिरों में भी जो है वो पूजा के रूप में डांस किया जाता था। यानी पूजा का भी एक तरीका था डांस, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी लोग डांस करते थे। तो जो किताब थी नाट्य शास्त्र, उसमें यह कहा गया है कि जो भारतीय क्लासिकल डांस है, यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य, उसके दो पहलू होते हैं। यानी ये दोनों चीज इसमें होनी चाहिए। सबसे पहला है लस्य। लस्य में हमारे जो भाव हैं, जो रस है या जो अभिनय है, वो उसको लस्य बोलते हैं। यानी डांस में दो चीज होती हैं। देखिए, एक तो होता है अंगों का हिलना, यानी कि हमारे अंग हैं उनकी लय कैसी है या उनकी गति कैसी है, तो रिदम और मूवमेंट। और एक होता है भाव, रस, हम अपनी आंखें कैसे हिला रहे हैं, हमारे चेहरे पर भाव क्या आ रहे हैं। तो डांस में दो चीजें होती हैं, एक तो शरीर के अंगों का हिलना, जिसे हम तांडव बोलते हैं। तांडव ये एक पुरुष प्रभाव को दिखाता है। जो तांडव होता है इसे हम डांस का पुरुष अंग बोलते हैं। और जो लस्य होता है, यानी कि साज सजना या जो चेहरे के भाव, रस, ये सब जो हैं, ये हम एक जो महिला का प्रभाव है वो मानते हैं कला के ऊपर। तो फेमिनिन और जो मेल दो चीजें होती हैं। पुरुष वाला जो पार्ट है हम उसे कहते हैं तांडव, और जो लस्य है उसको हम फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ डांस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई पुरुष है तो वो सिर्फ उसमें तांडव है, लस्य नहीं है, ऐसा नहीं है। बस ये हम एक तरह से उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर एक डांस है तो उसमें कुछ पुरुष प्रभाव है और कुछ एक उसमें नारी का प्रभाव है, यानी फीमेल का प्रभाव है। तो फीमेल वाले प्रभाव को हम लस्य बोलते हैं और पुरुष वाले प्रभाव को हम तांडव बोलते हैं। अब हमारे भारत के जो क्लासिकल डांस हैं उनमें 9 तरह के रस होते हैं। यानी आप 9 तरह की चीजें दिखा सकते हो, इमोशंस जो होते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो डांस करके। ये 9 रस कौन से हैं? सबसे पहला है श्रृंगार। श्रृंगार मतलब यहां पे प्यार है, लव। दूसरा हास्य यानी ह्यूमर। करुणा यानी कंपैशन, दूसरे के लिए करुणा, दया। रौद्र, रौद्र मतलब गुस्सा, एंगर। भयंकर यानी कि हॉरर। वीर यानी कि वीर रस, हीरोइक। अद्भुत यानी कि वंडर। विभत्स यानी डिस्गस्ट। शांत यानी कि काम। तो ये 9 रस होते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य में। भारत के जो नृत्य हैं उनमें जब हम मूड दिखाते हैं, यानी मनोदशा या जो अभिव्यक्तियां हम दिखाते हैं, उनमें हाथ के इशारों और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से हम उसे दिखाते हैं। तो 108 मौलिक मुद्राएं होती हैं, यानी कि फंडामेंटल मुद्रा होती हैं। अब एक उपन्यास है, एक किताब है जिसका नाम है अभिनय दर्पण। तो इसको लिखा है नंदिकेश्वर ने। नंदिकेश्वर की बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है अभिनय दर्पण। ये नृत्य के ऊपर लिखी हुई है। इसमें 3 तरह की बातें की गई हैं कि हमारा जो डांस होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। एक तो है नृत्य, एक है नृत्य और एक है नाट्य। कहने का मतलब हमारा जो अंग संचालन है उसे अभिनय कहलाते हैं हम। अंग संचालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति, क्योंकि मैंने आपको बताया अंग संचालन भी है और भाव भी है।
यानी कि तांडव भी है और लस्य भी है। तो अंग संचालन द्वारा भावों की अभिव्यक्ति जब दोनों मिल जाती हैं तो हम उसे अभिनय कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, नाट्य, नृत्य और नृत्य। तो डांस क्या है इनमें? नाट्य है, नृत्य है, डांस है, नृत्य। तो ये 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो नाट्य और एक नृत्य। तो इनका मतलब क्या होता है? देखो, पहले नाट्य की बात करते हैं। किसी पात्र का अनुकरण या किसी कथा के अनुसार अभिनय करना नाट्य कहलाता है। इसे रूपक भी कहा जाता है क्योंकि इसे हम आंखों से देख सकते हैं। जब कोई ऐतिहासिक पात्र है उसका कोई अनुसरण करता है तो उसके चाल ढाल, उसके बोलने का ढंग, वेशभूषा, तो हम उसे नाट्य कहते हैं। यानी मान लो अगर कोई भगवान शिव की तरह ड्रेसअप कर रहा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो नाट्य कहलाएगा। दूसरा है नृत्य। नृत्य मतलब क्या होता है? अभिनय के भेद में जिसमें भाव दर्शाने का स्थान ना हो पर सिर्फ ताल, लय, बद्ध अंग संचालन हो, उसे नृत्य बोलते हैं। यानी नाट्य वो है जिसमें भाव होते हैं, और नृत्य है सिर्फ अंग संचालन। तो नृत्य के अंदर जो है भाव दर्शाने का स्थान नहीं होता, लेकिन हमें नृत्य में दोनों चीज चाहिए होती हैं। यानी नाट्य और नृत्य जब मिल जाते हैं, इनका समन्वय जब हो जाता है तो नृत्य की उत्पत्ति होती है। तो यही यहां पे मैंने इंग्लिश में लिखी है ये सेम चीज कि नृत्य, नाट्य और नृत्य, ये तीनों क्या होते हैं? इन तीनों का वर्णन नंदिकेश्वर की अभिनय दर्पण किताब में किया गया है। अब भारत में हम क्लासिकल डांस सिर्फ 8 ही क्यों हैं? ये आप समझिए, इतने सारे डांस हैं भारत में, हजारों नृत्य हैं, उनमें सिर्फ 8 ही क्लासिकल डांस क्यों हैं? इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनमें तीनों चीज होनी चाहिए, नाट्य, नृत्य। ठीक है, पहली बात तो ये। फिर जो किताब लिखी गई थी नाट्य शास्त्र, उसमें कुछ कानून है, कुछ रूल्स हैं। अगर इन रूल्स पे, जो रूल्स हैं, इन पे खरा उतरता है कोई नृत्य, तभी उसे क्लासिकल डांस डिक्लेयर किया जाता है। अभी भारत में 8 हैं और संगीत नाटक अकेडमी इनको डिक्लेयर करती है किसी डांस को क्लासिकल डांस। इनमें गुरु शिष्य परंपरा भी देखी जाती है, यानी एक जो शिष्य है वो गुरु से डांस सीखता है। तो गुरु शिष्य परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्लासिकल डांस में, यानी शास्त्रीय नृत्य में। अब हमारे भारत में ये 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, इनको हम